Good evening, everyone. This is your nutritionist Abanna here from Dietryfit. Thank you, Milo, for giving me a chance again to talk about something quite common and trending among women. So, the topic for today is know about PCOS and its food. So, before jumping into the food part, I'd like to let you guys know more about PCOS, and I'll give a gist because it's a quite broad topic to talk. So you'll just have a gist about what PCOS is, how it is caused, and how it can be diagnosed, and what are the symptoms, and how food can be a major role in getting things corrected. So PCOS, which is also called as your polycystic ovarian syndrome, is a hormonal disorder which occurs in women of menstrual age, and it can occur as early as 15 to 16 years. So even with young girls, it can happen. And to bring in you notice, it's almost like 70% of the women have not been diagnosed, and they are not aware about being affected by PCOS. So more and more women are getting affected from PCOS in general, due to so many factors. For example, their stress, pre-diabetic can be a major factor contributing to PCOS. More in general, when we talk about PCOS being caused to young women and young girls, it's because of their shift in their eating and the lifestyle disorder. So this is one of the major and concerned part to be taken care of. So how do you see, like how we can say the main features of PCOS? So the main features of PCOS would be your cystin ovaries. You have high level of androgens in the body. You have missed or irregular periods. Okay, so when the menstrual cycle are not regular, so these are quite a symptoms or main features of your PCOS. So when we talk about polycystic ovarian syndrome, which is also called as PCOS in short, polycystic means more in number. So the cysts are more in number, right? So when the cysts are more in number, what happens? So basically, these cysts have fluid-filled sacs in them. So these fluid-filled sacs are basically a follicles, and each follicle have one immature egg with them. And they are not enough. The immature eggs are not enough to get into the mature part. Okay, so they are in a stage that they cannot bring ovulation. So when ovulation is not there, then generally we are not able to get our menstrual cycle on a proper way, right? So when the ovulation is lagged, due to the lack of ovulation, the hormones in female, for example, the female estrogen, the progesterone, LSH, and FSH. So these hormones are getting affected. So estrogen and the progesterone hormones are lowered, and the level of androgen, which is also called as the male hormone, is high. And due to हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन, जब एंड्रोजन का लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो हमारे इरेगुलर मेंस्ट्रुअल आने का चांसेस होता है, क्योंकि मेल हार्मोन इज डोमिनेटिंग हियर. सो द फीमेल हार्मोन हैज़ बीन रिड्यूस, दैट इज विच इज़ योर एंड्रोजन, एंड it has been dominated by estrogen and progesterone. Okay, so so how do we talk about the symptoms of PCOS? So the symptoms of PCOS would be like hair growth. Facial hair growth is a major symptoms, irregular periods, like I said, and you have acne. So acne is a major concern, which is also common these days due to pollution and other stuff. But yes, PCOS being one of the reason, so we have this occurred. Okay, and dark patches around your neck. Okay, so these are symptoms of your PCOS. So with these symptoms being noticed by you, definitely it's a concern. And how it can be caused, and how PCOS caused, and what are the foods to be involved, that will definitely talk about, because I have so many questions to cover up. So I'll try to cover up those questions with these questions. Okay, so I have quite some questions from the viewers here. So I'll try to read about them and give answers to one by one.
So before that, how we can diagnose PCOS would be like when we have high level of androgen, like I said, which is a main feature. So with that we can test that whether we have PCOS or not. Irregular period, again, which is very common. So with that also you will get to know whether you have PCOS or not. Okay, and next is your cyst in the ovary, that we can get through ultrasound, which can be done by the gynecologist. Okay, so I have a question. I have a question from Sandhya. So she's asking what causes PCOS and PCOD in general. So Sandhya, the exact cause about PCOS is not known. Okay, so the doctors also, the researchers also believe that the high level of male hormones, like I said, which is a main feature, like androgen, they what they do, they prevent ovaries producing hormones. Okay, and due to which the eggs are getting not getting released, the ovulation is not happening due to uh, increased level of androgen. Okay, एंड और रीजंस क्या हो सकता है इनका, इट्स लाइक जीन. सो जेनेटिक एक रीज़न हो सकता है, अगर आपके पेरेंट्स को था, आपकी मम्मी को था, आपकी दादी को, नानी को, किसी को था, तो दैट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड विथ यू. सो दिस कैन बी ऑल्सो कॉजेज अबाउट PCOS. And next is like insulin, excess insulin. So how insulin can play a role, I'll explain about that. So basically क्या होता है, जब हमारा बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, दैट हैज़ टू बी यूज्ड अप बाय आवर सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी, राइट. सो जब PCOS वाला कंडीशन होता है, यहाँ पर हमारा सेल वो इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पाता. So when the insulin is not able to use, so when the cells are not able to use the insulin, our body starts to produce more इंसुलिन. सो पैनक्रियास और इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा. क्यों? क्योंकि उसको लगता है दैट देयर इज अ लैक ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी. सो ड्यू टू विच जब ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होना लग जाएगा हमारे बॉडी में, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, क्योंकि हमारे सेल्स ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. सो दैट ट्रिगर आर ओवरीज टू प्रोड्यूस मोर मेल हॉर्मोन्स. ओके, जब हमारे मेल हॉर्मोन्स वापस डोमिनेट हो गए, लाइक आई सेड, वापस डोमिनेट होने लग जाएंगे, देन डेफिनेटली इरेगुलर पीरियड्स आने लग जाएंगे. क्यों? क्योंकि फीमेल हॉर्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, उनका लेवल लो हो गया, राइट. एंड इन्फ्लेमेशन. सो इन्फ्लेमेशन इज अगेन क्वाइट कॉमन अमंग women with PCOS. Okay, so I hope Sandhya, I try to clear your question. So I have another question from Sanchita. So she has asked directly into the foods to be taken and avoided while PCOS. So Sanchita, like I said, so one of the major reason why PCOS being affected in even in young girls and women, not even getting like not even more than 30 years, it's because of their lifestyle. So a gradual shift in their eating and the lifestyle disorder has been an concern. Okay, so for your question, to be precise with your question, क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, आई विल जस्ट टेल अबाउट दैट. सो ट्राई टू अवॉइड द रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड. तो जितना आप रिफाइंड, मैदा, इन सब चीज़ों से दूर रहोगे उतना अच्छा है आपके लिए. क्यों? क्योंकि प्रोसेस्ड फूड अगेन दे विल इंक्रीज दी शुगर लेवल इन द बॉडी, मतलब हमारे ग्लूकोज जनरेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. सो दैट विद दैट रीज़न देन डेफिनेटली एक्ने का इशू, हेयर फॉल एंड ऑल सो मैनी अदर थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग अप. सो वो सारे एक एड ऑन तरीके से हो जाएगा. सो ट्राई टू अवॉइड द रिफाइंड एंड द प्रोसेस्ड फूड. एंड what you can do, like what all things you can take is like you can include complex carbohydrate, good amount of protein, some good amount of healthy fats in your diet. Okay, so healthy fats में like अच्छे से आप लोग seeds वगैरह भी ऐड कर सकते हो. Seed cycling is quite common also, so you can include some pumpkin seeds, you can include some sunflower seed, chia seeds. So these seeds are quite common and easily available also, and cheap in rate also, so you can include them in your diet. So and what else you can include, it's like you can include millets, जैसे रागी, बाजरा, ये सारी चीज़ें हैं, इनको अपने डाइट में रेगुलरली कंज्यूम करने की कोशिश करना. एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी अदर इश्यूज लाइक थायराइड वगैरह नहीं है, देन डेफिनेटली यू कैन इंक्लूड दिस.
ठीक है. So I hope this is clear with you, Sanchita. So I have another question from Sonal. So Sonal, आपने एक बहुत कॉमन एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आई वुड से, कि मिल्क अवॉइड करना चाहिए क्या. सो आई गेट दिस क्वेश्चन फ्रॉम लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड इवन फ्रॉम माई क्लाइंट्स दैट क्या हमें मिल्क अवॉइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो बेसिकली क्या होता है, आई जस्ट टेल यू अबाउट द फैक्ट कि मिल्क से होता क्या है इन जनरल, देन वी विल टॉक वेदर टू इंक्लूड इट और नॉट. ठीक है. सो बेसिकली मिल्क क्या करता है, इट कॉन्ट्रीब्यूट टू अ लिटिल ऑफ द मेल हार्मोन इन द बॉडी. ठीक है. और मतलब वो एंड्रोजन लेवल थोड़ा बॉडी में बढ़ा देता है. इंसुलिन भी जब आई लाइक आई सेड, एंड्रोजन लेवल इज़ नॉट मच रिकमेंडेड फॉर वीमेन, राइट. जब ज़्यादा लेवल होने लग जाता है देन वी गेट ऑल दीज इश्यूज. सो हमें वो नहीं चाहिए. सो इंसुलिन भी एक्सेस अमाउंट में होगा तो भी इश्यू है हमारे लिए, राइट. सो ड्यू टू विच इट हैपन्स. बट as we all know that milk is a good source of calcium, so it is recommended that you can take dairy product in a limited amount. So it's not necessary कि आपको completely avoid करना है dairy product को, but yes you can limit the amount of dairy product. ठीक है. So I hope it's clear with you, Sonal. So I have another question from Kavita. तो उन्होंने पूछा है क्या PCOS परमानेंट है. सो कविता, नहीं, परमानेंट तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, राइट. सो PCOS भी नहीं है परमानेंट, बट येस विथ गुड डाइट, विथ गुड ईटिंग हैबिट, अच्छे से एक लाइफस्टाइल आपका है एंड यू आर फॉलोइंग अ गुड फिजिकल एक्टिविटी एंड आपका डाइट में अच्छे से कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वगैरह, जैसे मैंने बताया आपको, कॉम्प्लेक्स कार्ब, गुड प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, ये सारी चीज़ें होंगे तो डेफिनेटली यू आर फ्री ऑफ दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स, syndromes and disorders. So nothing to worry about, nothing is permanent. Yes, जब एक issue होता है then definitely there is a solution also to it, right. So try to have good amount of food, the right amount of food basically, and follow a good lifestyle. So that can be a like suggested thing for everybody. And even gynae वगैरह लोग भी यही बोलते हैं कि यू शुड हैव गुड लाइफस्टाइल. तुम्हारा ईटिंग हैबिट अच्छा होना चाहिए. जब ईटिंग हैबिट अच्छा है तो मतलब घूम फिर के बात डाइट में आ जाता है, राइट. So this is the thing. It's not always about the medication, but yes, good lifestyle, good food, good physical activity, then definitely you can get rid of these things. Okay. So एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि इंदु ने पूछा है वेट लॉस टिप्स फॉर PCOS. सो बेसिकली I'll give you some tips like how we can go about with PCOS and how weight loss helps it. ठीक है. तो बेसिकली जब हम PCOS बोलते हैं तो लाइक मैंने बताया आपको सिम्टम्स वगैरह, तो PCOS में सिम्टम्स में वेट गेन एक मेजर इशू होता है. सो पीपल जनरली गेन वेट. सो जब वेट गेन होता है देन डेफिनेटली लिथार्जिक एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स कम्स अलॉन्ग विद दैट, राइट. हेयर फॉल होने लग जाता है. सो ये सारे एक सिम्टम्स जब होने लग जाएगा बॉडी में एंड यू स्टार्ट टू गेन वेट, देन डेफिनेटली योर सोल्यूशन टू इट वुड बी योर वेट लॉस. सो PCOS की वजह से यू विल स्टार्ट गेनिंग वेट, देन गेटिंग, जब वेट वापस आपके ट्रैक में आने लग जाएगा देन डेफिनेटली योर PCOS वुड बी गॉट रिडन ऑफ, राइट. सो द टिप्स वुड बी लाइक पोर्शन कंट्रोल. जब खाना हमारे पोर्शन में ही रहेगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी व्हेन यू टेकिंग दैट मच ओनली, सो दैट इज़ वेरी गुड थिंग फॉर यू. जब हमारा कैलोरी कंजप्शन अच्छा है एंड यू आर नॉट taking more of the calories, then definitely वो store नहीं होगा, that will be utilized, right. And second would be include good greeny vegetable. So vegetable जितना अच्छे से आप खा सकते हो उतना अच्छा है, greeny vegetable and seasonal vegetable. So these things are very good. Try to avoid outside food, like I said, junk foods वगैरह खाना छोड़ दो. Processed food होता है, fried होता है, सारी चीज़ें it's not good. So that will lead to your weight gain, that will worsen your situation, right. And regular exercise अपने आप को फिजिकली फिट रखना उतना ही ज़रूरी है जितना आपको डाइट फॉलो करना है. व्हेन वी कंसिडर वेट लॉस, 80% डाइट काम करता है, 20% योर फिजिकल एक्टिविटी. बट येस, फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो एज नेसेसरी एज वी डू डाइट. ओके.
कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड अवॉइड प्रोसेस फूड, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लो अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब थोड़ा थोड़ा करके व्हेन यू स्टार्ट चेंजिंग इट इन योर लाइफ स्टाइल, देन डेफिनेटली you'll see a very good result. But yes, try not to follow anything from Facebook or from the feeds you get, or from the Google and all that stuff. So always try to get your consultation guidance from the expert only. Okay, so because in every page, also in every site also, you'll get to see so many other different things. But yes, you should always get your preference from the expert. Okay. So I hope Indu, I made a clear conversation with you. And so I have another question from Neetu. सो नीतू ने पूछा है क्या पिल्स लेना ज़रूरी है, एंड उन्होंने ये भी लिखा है कि दवाई मैंने 1 महीने खाया था एंड उस टाइम पे ठीक हुआ, एंड देन अगेन आफ्टर स्टॉपिंग द मेडिसिन उनको इशू वापस होने लग गया। ओके, सो नीतू आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हाफ ऑफ द पीपल दे आर नॉट अवेयर, or they think that medication and would be the solution to everything and anything, right? So ज़रूरी नहीं है कि pills लेना ज़रूरी है या नहीं, that depends on your condition, right? So if the condition is quite abnormal, मतलब थोड़ा ज़्यादा है cyst वगैरह issue, then definitely it is quite recommended कि gynae जो आपको बताएंगे उसके हिसाब से जाना. But yes, even the gynae also suggests to have good diet, good lifestyle, good physical activity to be followed. Okay, so pills, it's not the end solution to anything. Yes, pills को खाने के बाद एक पॉइंट तक it will be going very good, but yes, आफ्टर यू स्टॉपिंग इट, एंड आपने उस टाइम पे अच्छे से डाइट वगैरह फॉलो किया, एंड देन आपने एक्सरसाइज भी अच्छे से किया, बट उसके बाद आपने छोड़ दिया, देन डेफिनेटली अगेन आपका कंडीशन सेम हो जाएगा. सो इट्स बेटर यू स्टार्ट doing a good lifestyle and not depending upon your medications. Okay, so I try to cover most of the points from the viewers. I hope it was much clear and helpful to you. And before ending, I would like to give a small tip on how to regulate your menstruation. So parsley leaves, which are if you have heard about it, so quite common and used in the kitchen also, like it is easily available. So basically it is rich in vitamin C also, so helps to regulate your menstruation. What you can do, you can take it 2 to 3 times in a day. Boil the parsley leaves in a glass of water and drink it post your lunch and dinner. Okay, so this would be one of the thing which you can include in your diet on a regular basis as a natural remedy. Then definitely if the condition is worsened, then it's quite recommended that you get consult from the gynecologist. Okay, and another tip I would like to give, like during periods, like you get quite a lot of pain, right? So with that, what you can do, you can take cumin seeds, take half a teaspoon of cumin, boil it in a glass of water and drink post your lunch and dinner. So that will definitely help you relieve from the pain. Thank you so much guys for your time, and I hope it was clear, and I try to made have the things done. Thank you so much.